Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay. So we are doing the chapter fractions, and we are on the last exercise of the chapter. So we have done till ninth question. So we were on ninth question. You gave us 7 minutes homework, and Yes, we sir. were doing. Okay. We are on the ninth question of exercise 2C. Sir, the answer is rupees 28 whole 1/2. Okay. So have you all done the ninth one? Yes, Yes, sir, sir. and seventh and eighth also. Okay, very good. So now we will do the 10th one. Okay. Question number 10. Okay, in this, it is written that if the cost of a notebook is rupees 27 whole 3 upon 4, this is cost of one notebook. Okay. How many notebooks can be purchased for rupees 249 whole 3 upon 4? So, total आपके पास जितने रुपीस हैं नोटबुक्स परचेज करने के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है रुपीज 249 होल 3 upon 4. Okay. And one notebook की cost भी आपको given है. You have to find the number of notebooks you can purchase in the total amount that you have. So what you will do to find the number of notebooks, you will divide the Sir, total we will amount you divide. have. Yes, you will Sir, divide we will divide. You will divide the total amount you have by the cost of each notebook. Okay. So total amount सबसे पहले तो टोटल अमाउंट कितना है it is rupees 249 whole 3 upon 4. Okay. And the cost of each notebook is rupees 27 whole 3 upon 4. 27 whole 3 upon 4. Okay. So number of notebooks that can be purchased. Sorry, number of notebooks that can be purchased. उसके लिए क्या करेंगे? You will divide. Okay. Divide 249 whole 3 upon 4 by 27 whole 3 upon 4. समझ में आ रहा है?
Okay. Yes, sir. Okay. Now change it into improper fraction. 4 into 249 ये हो जाएंगे आपके 996. सही बोला मैंने 996. That means 999 upon 4. ये चेक करना, is it correct? 999 upon 4 आ रहा है? हाँ. And this will be 999 upon 4 multiplied by 4 upon 1, 464. 999 को 111 से डिवाइड करके यूज करेंगे. So that means 9 notebooks. 9 is the number of notebooks you can purchase. Okay. Yes. Tell me. We all understand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we proceed with the next question. Have you all done this? Yes, sir. Done. So, question number 11. Removing it, okay, from the board. Question 4. Then question 11. Yeah, this is at a charity show. At a charity show, the price of each ticket was rupees 32 whole 1 upon 2. The total amount collected by a boy was this much. How many tickets? बिल्कुल same type of question. Try it on your own. जल्दी करो. I'm also doing it. Okay, sir. Let's see कौन पहले करेगा. मैं okay. Price of each ticket is 32 whole 1 upon 2. Total amount collected rupees 877 whole 1. Tickets 877 whole 1 upon 2 divided by 32 whole 1 upon 877. 1755 upon 2 divided by 65 upon
से 2 कट गया है, डिवाइडिंग बाय 13 है, 13 से काटना, डिवाइडिंग बाय 13 गेट 5, again divide by 5 now, plus 2, 27. Sir, the answer is the last answer is 27. Yes. So he sold 27 more. Sorry, 27 tickets for sale. How tickets sold were 27. So all of you, now you all try question 12 and 13. Okay, 12 one एक ही try करो बस. Try the 12th So one on your 12 own. one. Yes. Okay, sir. Have you all done completed the 11th one? Yes, sir. The 12th one on your own, all of you. Okay. Try the 12th one.
Okay, done, all of you? Yes, sir. Done. Sir, between I answer? was disconnected. Sir, so please So, tell the 10th one answer. so the answer is 11 students. Yeah, very good. Question 10, the answer was 9. Okay, sir. Question 11, the answer Sir, is the 26. correct answer when we cut 5 to 2 is 5 7 5 is answer 11. And question 12, the answer is 11. Very good. Now we will start with Sir, which question we have to do? now we will do the 14th one. Sir, question 12 and 13. 13th, sorry, 12th one I asked everyone to do their 13th you will do in homework. Okay, sir. Question 14. A bucket contains 20 whole 1/4 liters of water. A small jug has a capacity of 3/4 liters. How many times the jug has to be filled with water from the bucket to get it empty? तो बकेट में टोटल पानी इतना है, एक बार एक जग में 3/4 लीटर वाटर आ जाता है, तो कितनी बार में हम बकेट में से पानी निकाल करके मतलब विद द हेल्प ऑफ जग से हम बकेट में से पानी निकाल रहे हैं बाहर, तो कितनी बार जग को फिल करके पानी बाहर निकालना है, दैट मींस हमको बकेट को एम्प्टी करना है. ओके, तो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ट्राइड इट, देयर मस्ट बी अ बकेट एंड देयर मस्ट बी अ मग. मग से जरूर आपने पानी निकाला होगा अगर कोई बच्चा नहाता होगा. नहाते हैं बच्चे यहाँ पर? Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है, तो बड़ी नई बात बताई थी. देखिए, बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग नहाते हो. So whenever you take a bath, what you do, you take water out of the bucket with the help of a mug. वैसी मग की जगह यहाँ पे जग है, जग या मग एक ही बात हो गई. So जितना मग में पानी आता है, if the mug is smaller, it will take obviously more number of times, ज्यादा बार आपको पानी निकालना पड़ेगा मग से, तभी तो अगर मग मान लीजिए आपका बड़ा साइज का है, पानी जल्दी खत्म हो जाएगा बाल्टी में. क्यों? क्योंकि एक बार में ज्यादा पानी निकलेगा. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मग. ठीक है, तो ये कैसे आप निकालेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू फिल द मग एंड टेक द वाटर आउट. ये कैसे पता चलेगा? यू डिवाइड द टोटल वाटर दैट इज देयर इन द बकेट बाय द कैपेसिटी ऑफ द मग. ठीक है, बस डिवाइड कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितनी बार में बाल्टी खाली हो जाएगी. ठीक है, तो water in the bucket, total water in the bucket. This is 20 whole 1/4 liters, and capacity of the jug, is 3/4 liters. Number of times the jug has to be filled. The number of times the jug has to be filled is, you have to divide and you will get the answer. 20 whole 1/4 divided by 3/4. So this is 81 multiplied by 4/3. 4 से 4 कट गया, 81 को 3 से काट देंगे 27. तो 27 टाइम्स कितनी बार जग को फिल किया जा सकता है बकेट में से? 27 टाइम्स. अंडरस्टूड? Yes, sir.
Okay, done. I'm removing it from the board. Oh, sir. So just please, sir, wait for a minute. Done, sir. Yes, sir, done. Okay. Anyone else is still doing? Done. Okay. No, sir. Sir, we can do next two questions by ourselves. Then try the 15. Try the 15. So which question we have to try? 15. Question 15. Sir, 14, 15. अच्छा. Try question 15, all of you. Okay, sir. Yeah, all of you done? 15.
Yes, sir. The answer is 5 upon 2. 2 whole Sir, 1 the upon answer is 2. 5 upon 2, 2 whole The 2 answer upon is 1. The product of two numbers is 15 whole 5 upon 6. If one of the numbers is 6 whole 1 upon 3, find the other number. तो दूसरा number find करने के लिए there are two ways of doing it. Either you Sir, can this is form an like equation. example 8. So either Sir, you can form an with- equation. देखिए question 15 में either you can form an equation, let the number be x, ऐसे करके भी कर सकते हैं, or you can directly divide. Sir, like example for 8. Directly divide 15 whole आराम 5 से upon आराम 6 से by 6 whole 1 upon 3. Sir, the answer is 5 upon 2. एक और तरीका है, you can make an equation, you can write here let the number be x, इस तरीके से करके भी कर सकते हैं. Okay, Okay, clear? sir. Yes, sir. Sir, question 16 is also very easy. 16 बिल्कुल सेम यही टाइप का है, so you will do 16th in homework. मैं आपको कराता हूँ question number 17. Sir, last. 16th is your homework, okay? और अगर टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों से अभी करवाऊंगा 16th वाला, ठीक है? बिल्कुल सेम है 15 की. I hope there is no problem in 15th one. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई question 15? No, sir, it No, is like sir. example No, sir. 8. Question 17. By what number should 6 whole 2 upon 9 be divided to obtain 4 whole 2 upon 3? So let the number be, let the missing number be x. Let the missing number be x. Okay. तो अब ये कह रहे हैं 6 whole 2 upon 9 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, so that आंसर क्या मिलेगा, 4 whole 2 upon 3 मिलेगा. तो हमने मान लिया x से डिवाइड करेंगे. अब कैसे करेंगे देखिए, 6 whole 2 upon 9 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, हमने मान लिया x से करेंगे. तो 6 whole 2 upon 9 divided by x. तो डिवाइड करने के बाद what are we getting? We get 4 whole 2 upon 3. Understood? This is the equation. Have you all understood the equation? 6 whole 2 upon 9 को कौन से नंबर से डिवाइड करें? 56 So we upon have 9 assumed divided x. let this be divided by x. हमने मान लिया it should be divided by x, तो यहाँ पे divided by x लगा दिया. And after dividing by x, we get 4 whole 2 upon 3. Okay. So we can now simplify this. So 9 into 6, 54 plus 2, 56 upon 9. So 56 upon 9, 14 upon. Divided by x को क्या ना write multiplied by 1 upon x. ये आपने सीखा था. Divide को multiply में change कर लिया and divisor का reciprocal कर लिया. x का reciprocal क्या होगा, 1 upon x. और divide की जगह multiply कर दिया. सबको मालूम है ना ये ऐसे करते हैं. Yes, sir. Now 3 whole, sorry, 3 into 4, 12, 12 plus 2, 14. 14 upon 3. Okay, now how will you simplify this? Cross multiplication. Sir, 9 2 ja. 9 इधर multiply में चला जाएगा, 56 डिवाइड में आ जाएगा. So 1 upon x equals to 14 upon 3 into 9. 9 देखिए न्यूमरेटर में के साथ multiply होगा and 56 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So this is known as cross multiplication. You have done this in your previous classes. Cross multiplication. Yes, sir. In exercise first of fraction. तो ये 3 और 9 को कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा. 14 को So 3 upon 4. करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. So 1 upon x is equal to 3 upon 4. But हमको 1 upon x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है x की वैल्यू. x कहाँ से मिलेगा? You will do reciprocal both the sides. x निकालने के लिए क्या करेंगे? What is the reciprocal of 1 upon x? 1 upon x So का x- reciprocal so x. हाँ.
एंड आरएचएस में भी रेसिप्रोकल कर देंगे, सो यू गेट 4/3. क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. So this is the answer. X equals to 4. Sir, 1 whole 1/3 is the answer. 1 whole 1/3. Correct. Sir, question 16. So tomorrow we will start the new chapter. Yes. From tomorrow we Okay, will sir. start. And you all can now try question 16 जब तक एक मिनट 2 मिनट Okay, 15 sir. minutes are left. So Okay, sir. You try question number 16. Okay. Yeah. For that.